a question for you guys. We have a problem. Just one though. Why is India full of simps? So, Ink's perspective. Why is India full of simps? क्या हाल चाल, कैसी हो बहन? कितना काम किया कमेंट्स में लिखो. सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारा काम है तुम्हारी जिंदगी में. जो तुम काम करोगे वो तुमको बनाएगा. good, brother. जो काम करोगे वो मकान बनाएगा और जिस मुकाम पे पहुंचोगे वो बनाएगा. तो काम करो. आज से अपने हाथ में अपनी जिंदगी का कंट्रोल लो. कहो भैया मैं फाड़ के हाथ में रख दूंगा. जितने भी अटैकर्स हैं नीचे कमेंट में लिखो भैया कितना फोड़ा. और जो जो अटैकर नहीं है भैया हमारे को ज्वाइन करो. कम्युनिटी हम लोग जहाँ पे गर्व से कहते हैं कितना काम किया और मेंटेन रखते हैं एवरी सिंगल डे कितना काम कर रहे हैं हम. जिसका काम नहीं हो रहा, जो परेशान है, जिससे भाई प्लानिंग नहीं होती, आप भैया अटैक मोड उठाओ. आओ अटैक मोड के अंदर बहुत सारी टेम्पलेट. You know what? Actually, what you can buy attack mode, or you can just join our Discord. We do hold each other accountable. We have daily conversations. At the end of the day, we're leaving nothing on the table for 2025. We're taking it all, baby. We're leaving nothing back because there's only one way to do things here in this community, and that's the right way. And the right way is being a good freaking human being, working hard, and trying to be 1% better each and every day. And if not, I'm going to look at you like this. How he's looking at me right now. Like, why are you not doing it, bro? टेम्पलेट्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेम्पलेट है, जर्नलिंग की टेम्पलेट है, स्क्रिप्ट्स हैं जो कि अगर आप फिसल जाते हो तो आपको वापस लाती हैं काम पे, और फिर बहुत सारी मैनेजमेंट और प्लानिंग की टेम्पलेट्स हैं. एक चूज कर लो, एक गोल पकड़ो अपनी जिंदगी का और You can buy the book, or you can just join the Discord. Just saying. ले जाओगे. ये देखो भैया, मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में बस बताना चाहता हूँ. इसमें है 8,49,000 लाइक्स इस रील में, और इसमें व्यूज थे आई थिंक 28 मिलियन, और ये 4 दिन पहले अपलोड हुई है. 4 दिन पहले 28 million views only in Let's see this 28 million views. Let's see this. India. Beautiful, absolutely beautiful, just beautiful. तो क्या है ऐसा, क्या है ऐसा कि भाई 8,50,000 लोगों ने. I bet you it's her swinging her hips, as she just got great assets. You know what I mean? She was blessed with some great real estate, if you know what I'm saying. 8.5 लाख इंस्टाग्राम पे बैठे लोग रहेगा. आओ देखें. Okay, cool. Okay. Boom. Called it. Okay. Okay. I see what you're working with here. I wasn't familiar with your game, but it says when it's your Pookie mistake. Are we talking about Pookie from the Haktua girl? What? Okay. I'm still searching. Okay, for content. fighting. Yeah. Okay. She hitting you with that ooh face right now. What the hell are we looking at? Okay, that's it. That's on the you. reel is repeating. That's it. That was it. 8.5 lakh. Woo! 8.5 lakh दोस्तों. Hey man, she posts this thing first thing in the morning, and when you wake up with a fresh pitch tent. You need to take that tent down, don't you? She just made content for you. अब तुम सिंपल पैरेलल देख लो पहली चीज. I love this though because I think this is slightly hypocritical for guys to kind of care this much about girls posting this kind of content. Granted, I think there's absolutely nothing wrong. She has a full long sleeve shirt on. It's tucked in. I don't think there's anything wrong with it she posted. And if she got 28 million views on it, who cares? I don't think this is like, I need better evidence if India is going to be simping for women. Like I can maybe understand maybe culturally some things going on there, but that's not bad. एक कंप्यूटर इंजीनियर को रख लेते हैं, एक आर्किटेक्ट को रख लेते हैं, एक डिजाइनर को रख लेते हैं, एक पोएट को रख लेते हैं. पोएट सोच रहा है यार भाई मेरे को पोएट्री, यार मैं चाहता हूँ पोएट्री की वजह से फेमस हूँ. हो सकता है डिजाइनर हो जो पेंटिंग भी करता है, वो अपनी पेंटिंग डाल रहा है यार मैं पेंटिंग से फेमस हूँ. एक आर्किटेक्ट है जो लोगों को What's new in that? That's what I'm saying. एंशिएंट आर्किटेक्चर से लेके अलग अलग अजंता अलोरा जो भी केव्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी फाइंडिंग्स हैं, लोगों को एजुकेट कराना चाहता है भाई इन सब चीजों के बारे में. वो उस पर कॉन्टेंट बना रहा है, और तुम्हारा कंप्यूटर साइंस वाला भाई कोडिंग सिखा रहा है. उनके में व्यूज आ रहे हैं, पहले में आ रहा है व्यूज, दूसरे में आ रहा है व्यूज, तीसरे. At the end of the day, what is there going to be more attention in? Is it overall like the human body and the adult industry, right? Or is it going to be in like painting? Painting's super popular, but you know what's more popular? Going to a strip club and seeing that kind of content, if you would. If you want to be an astronaut, you want to be a scientist, you want to go on YouTube and just yap about things, guess what? There's more people interested in just the human body than just the things that you're interested in. So ideally, when you hear sex sells, it's one of the most fundamental things on this planet to where nothing's going to, you can't get mad at it. This is why I get so frustrated with guys online
who are coming at this like there's a higher sense of virtue of like, yo, I'm trying to be a painter, an architect. I'm trying to be an actual historian or a journalist. It's like, okay, whatever you're passionate in, I promise you the adult industry is like 100 times bigger. So don't get mad if the adult industry is getting more eyeballs than you, right? Just because you're sitting on your high horse because you think you're better than somebody, than a girl with great real ass state, if you know what I'm saying, because you think you're giving out like some type of journalistic viewpoint. तीसरे में आ रहा है व्यूज, चौथे में आ रहा है व्यूज, फिर यहाँ पे एक लड़की है भाई जिसने Kai Young? 0 से Who's शुरू that? हुआ, उसने क्या किया, क्यूट दिखूंगी और डांस करूंगी, क्यूट दिखूंगी डांस करूंगी. किसने सोचा था कंप्यूटर साइंस, नॉलेज, You see what I'm saying? एजुकेशन, जितनी भी चीजें हैं, मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस इतनी बेवकूफ है दिमाग से कि this भाई is the क्या मैं movie? रिसीव करना चाहूंगा अपनी जिंदगी में, क्या इनवाइट करना चाहूंगा. सिंपल वैल्यू सीकिंग बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, मैं अगर इंटरनेट पे बैठा हूं, एक चीज जो कि मुझे कनेक्ट करती है इंटरकल्चरली टू एवरीथिंग एग्जिस्टिंग ऑन द प्लैनेट, थॉट से लेके, नॉलेज से लेके, पर्सपेक्टिव से लेके. What are we also going to talk about the guys? What about all the guys who are thirst trapping like women on here, right? We know there's some guys, the SRKs of the world, who are just like the most handsome man on the planet. They're jacked, they're handsome, and whenever you walk, you have to see it like whenever they walk, there's like a woman behind them and like a caution. There's a wet floor around them sign because this guy just walked by, or he'll fall back and there's just women sliding underneath him to help catch him. Like, it works in both ways. So if you're a dude who's not born with winning the genetic lottery, like most of us aren't, right? I look like a monkey without my tail on, or without a tail, excuse me. Like, you have to either be charismatic, funny, or be really passionate about something and just dive into that and not care about having all the attention in the world. If anything, I think he's being a little hypocritical here about saying that she's doing this for the attention when he's mad at her for getting more attention than him. Opportunities से लेके, SRK is 60 now, and I bet you he still pulls more than everybody in this chat room right now. लोगों तक क्या है मैं चूज कर रहा हूं, मैं चूज करूंगा. But he isn't talking about women. He is talking about all the people that engage in this. You're missing the point. It's not about the girls posting this. This is about the dude who is engaging with this. All dudes have one interest in common, and that is the adult industry, if you know what I'm saying. When we see a girl with thick thighs and a fat ass, or good old jugs up top, something primeval, it doesn't matter what you're in, you just look at that. Just like a girl sees a dude with really broad shoulders, great jawline, and like a freaking, Vienna sausage hanging in between his thighs, she's gonna be like, yo, I need that. That's what I'm saying. Like, you cannot get mad that draws attention, and when that's online, because the online is the instant global place, you can't get mad that that's going to draw more numbers than you. You just have to stay in your lane and appreciate everything that comes your way. It's human nature. No, I totally agree. So it's like, you can't get mad at this. And also, here's another fact. I'm going to go here. You know what? Another fact. When you look at girls, I'm thinking of Amaranth, right? So whenever I'm thinking of something along these lines, and I'm thinking of Amaranth, this is actually scary to look up. This chick, right? You wouldn't imagine that this girl is actually deadly smart as a businesswoman. She has great investments. She speaks, whenever you hear her talking about her business and how she's investing her money and diversifying her money and trying to make her money work for her, she's actually incredibly smart. Right? And I'm sure that there's some that probably don't live up to this example, but I'm sure that there is many more that are like Amaranth than there are not. Or, you know what, 80-20 rule. I'm sure maybe only like 40% of them or 20% of them this way. But we can't just assume that all these girls who are born with great assets and an amazing real estate, that they're just a piece of land. She has OnlyFans? Of course she does. Dance cute, dance cute. Her? Don't know. 27 मिलियन. जो भाई तुम्हें कोडिंग सिखा रहा है वो कभी इमेजिन कर सकता है 27 मिलियन 4 दिन में? क्या मैं कभी सोच सकता हूं? मैं कोई कंटेंट पीस डालूंगा जिसमें अगर मैं पर्सपेक्टिव शेयर कर रहा हूं, चाहे वो कितना घमासान पर्सपेक्टिव हो, चाहे कितने स्किलफुली उसको मैं आर्टिकुलेट कर लूं, चाहे कितना वैल्यू उसमें ऐड कर दूं. And this is just going against the grain of what we've seen already, of like, at least here in America, where all, like, if we look at games over here in America that are being put out, it's like all the women
have this really masculine look to themselves. While you look at all the games over at the East, they're just really empowering this, or really leaning into like, just putting in attractive people into the games. And it's funny to see people gravitate just naturally to playing around those attractive people. I think we're all attracted to that and all want to be more like that. We play video games to escape reality. We get online to try to have some type of escapism, maybe connect with our community, find inspiration and motivation. Like, I think people get twisted too much on the negative side of things. Real answer is घंटा. And इसके पीछे क्या है? Base क्या है? तुम्हारी चॉइस. जहां पे अभी एक्टिंग मत करो कमेंट सेक्शन में कि भाई नहीं भाई हम नहीं, भाई ये लोग ये वो भाई ये हम ही हैं. जो भी खिलाड़ी है, मैं उसको तुम्हें बता देता हूं सिमुलेटेड रिएक्शन क्या होगा. ये रील आएगी, तुम देखोगे Yeah, but we shouldn't. That's the point. What do you mean shouldn't? You shouldn't let it take over your life, but you can't act like there's not attractive people in the world and all of a sudden you're like, well, I got a problem I gotta fix. Okay. क्यूट हो तो मैं क्या करूं? बहुत genuine बात है. क्या करूं मैं? And what I'm saying is, I think they need to make a 12-minute video on this ranting about how they think it's crazy. I think it's crazy. नाच ले रहे हो, क्यूट हो तो मैं क्या करूं? जो ये रिएक्शन दे सकता है अपनी जिंदगी में टू वेरियस इटरेशन जो अभी हमने देखा उसके, ना वो कभी जिंदगी में सिंपिंग करेगा, वो हमेशा प्रायोरिटी देगा उन चीजों को जिनका महत्व है, जिनकी अहमियत है. मैं नहीं कह रहा भाई अगर आपकी जिंदगी में कोई क्यूट व्यक्ति है जिससे आप प्रेम करते हो, वो आपसे प्रेम करता है तो आप उसको अटेंशन नहीं दोगे, प्यार नहीं दोगे. मैं थोड़ी कह रहा हूं. मैं कह रहा हूं भाई अपनी जिंदगी में तुम्हारी अटेंशन को, तुम्हारी कॉग्निटिव कंट्रोल को, तुम्हारी भावनाओं को जो इंसान कंट्रोल कर सकता है, ये सिंपल देख के कि भाई मैं नहीं बहने वाला, नहीं बहेंगे भाई. सिर्फ क्यूटनेस और लल्लो झप्पो वाला डांस मेरे सेंसेस को नहीं हिला देता. इतना आसान नहीं है. मुझे पता है मुझे कहां जाना है, मुझे पता है मैं कौन हूं. गोल्स क्लियर है मेरी नजरों के सामने, मुकाम क्लियर हैं. ताजमहल बनाने लेकिन मुमताज के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए में भी, अपने माँ बाप के लिए में भी, अपने लिए में भी, रियल एस्टेट के लिए में भी, इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से. क्लैरिटी वाला इंसान सबसे खतरनाक इंसान है. जिसको पता है उसे क्या चाहिए, उसको फिर ये जरूर पता होता है कि क्या नहीं चाहिए. यानी कि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, मैं अपने आप को इन लल्लो झप्पो फीलिंग्स में डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. अगर मैं इसमें लल्लो झप्पो की तरह डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा हूं तो भाई मेरे पास ऐसे 50 और आएंगे जिनसे मैं और डिस्ट्रैक्ट होता रहूंगा. बंद कर. There is a lot of truth in what you're saying. I don't disagree with you saying that you don't like really watching half-naked girls on Instagram. Like, I'm getting nothing but a waste of time out of it. I'd rather go out and talk to a real girl and try to get into a relationship. I think you absolutely should try to do that, right? And it is crazy that the algorithm just seems to feed you a whole bunch of half-naked chicks with big old butts, right? But I don't think it's necessarily crazy for people to man, it's normally in like a disguise too of like health and fitness, right? So it's like on Instagram, people are normally trying to like look up how to lose weight, how to get in better shape, how to have self-improvement, and it's like something that is just tossed into that category as well. So maybe there is a problem in that. करो, आओ और काम करते हैं. आओ हैसियत बनाए, आओ औकात बनाए. आपने आपको खतरनाक से खतरनाक योद्धा बनाता हूं भाई. मैं कितना पा सकता हूं, आओ पाते हैं ना. सिंपल एंड प्लेन टर्म्स में एक चीज समझो, जिस जीवन में तुम इंटरेक्ट कर रहे हो, जो इंटरफेस करते हैं जिस रियलिटी से, वो एक मटेरियल रियलिटी. You're not wrong. पर्सपेक्टिव बिल्डिंग के लिए, समझदार बनने के लिए, खतरनाक बनने के लिए तुम्हें उसके बियॉन्ड देखना पड़ेगा. वो एक हो गया सेकेंडरी लेयर तुमने ऐड करी परसेप्शन की. बट इंटरेक्शन जिससे चल रहा है वो तो मटेरियल दुनिया ही है. मटेरियल दुनिया में अगर ताकत प्राप्त करनी है तो मटेरियल ही होगी वो इन नेचर, यानी कि मॉनेटरी. पैसे वाले के पास ताकत कंट्रोल होगा, बोलबाला होगा, कंसिडरेबल. उसके बाद परसेप्शन आ जाता है, तुम देखते कैसे हो दुनिया को. ये इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग. सो अंडरस्टैंडिंग की लेयर दूसरी है, अचीवमेंट की लेयर यहां है. आज की दुनिया में लोग थ्योरी में अंडरस्टैंडिंग को पोजेस करके अचीवमेंट को कहते हैं कि उसका भी क्या फायदा है क्योंकि तुम्हारी माँ बाप की जिंदगी के सारे दुख स्ट्रेसर्स हटाना, तुम्हारी खुद की जिंदगी से सारे दुख स्ट्रेसर्स हटाना, जो भी तुम्हें पार्टनर मिलेगा, जो भी तुम फैमिली क्रिएट करोगे, उनकी जिंदगी से स्ट्रेसर्स बहुत हद तक रिमूव करने के लिए. I think bros lost the plot on this. I know what you guys are saying in this. I hear you. I hear you. And maybe I'm just looking at this through my point of view, but if I'm posting something or I see somebody like online who's working out and like, maybe posting some thirst trap stuff and you engage and you're trying to maybe create content to collab, try to grow your business and network, like
I don't know. I guess it just all depends on the on the reason why you're viewing the content. Are you on the toilet just trying to, knock one out real quick, or are you trying to collaborate, maybe do some business ideas? I don't know. There is a lot of creepos out there though that are just trying to send the DM, send the pickle, and see if that's enough to get it, ये eaten. पैसा चाहिए। बाहर अगर हवा गंदी है तो भाई माइग्रेट करने के लिए पैसा चाहिए कि तुम इजीली, तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम चूज करते हो मुझे रहना कहाँ है। तो पैसे की औकात बहुत है क्योंकि तुम एक मटेरियल दुनिया में रह रहे हो। सेफली ट्रैवल करने के लिए पैसा चाहिए, बढ़िया से बढ़िया सर्विसेज के लिए पैसा चाहिए। तो एक चीज सिंपल सी क्लियर करो, अंडरस्टैंडिंग तो भाई चाहिए ही चाहिए। वो तुम्हें यहां से स्ट्रांग बनाएगी, तुम गुलामी से बच जाओगे। यानी कि भाई तुम्हारे सामने किसी भी तरह का ट्रैप डाल दिया जाए, तुम अपना पैर नहीं डालने वाले उसमें, लेकिन अचीव तो तुम्हें करना ही करना है। सक्सेस तुम्हारे सामने है, तुम्हारे हाथ में है। डिस्ट्रैक्ट होना बंद करो, ये टेम्पररी डिस्ट्रैक्शंस हैं। Okay, now we can agree on this. If you have a mission, if you have ambition in your life, there's a goal that you have set out. Write down that goal step by step. How are you going to get to that goal, and then execute on that. Don't let a hot chick come into your life. Don't let somebody who liked to post on Instagram come in, and all of a sudden you're just trying to get that kind of attention, because there's only so much energy and attention that you can allocate in a day. Allocate all your attention, all your focus onto your dreams, onto your goals, and make them happen. I totally agree with this. ये सब लस्ट, क्यूटनेस, तुम्हारी सिंपिंग से फायदा किसका हुआ? इस इंसान का हुआ ना। इस इंसान का तो करियर बढ़ता चला जाएगा। अपेरेंटली सिंपल क्यूट होना आज की दुनिया में सफिशिएंट है, क्योंकि एक बहुत जायंट पॉपुलेशन है जो इतनी डिप्राइव्ड आई थिंक और इतनी खाली बैठी है अपनी जिंदगी में कि भाई वो सिंपल पैरासोशली एक इंसान जो क्यूट डांस कर रहा है, 8 लाख लोग कंकरेंटली जिसको लाइक कर रहे हैं, हार्ट दे रहे हैं, यानी मेरे एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस को कोई अटेंशन नहीं मिलने वाली, तब भी मैं घुस के अपना टाइम खोटी करूंगा, अपनी अटेंशन खोटी करूंगा, और अपनी जिंदगी में हो सकता है दुख दूंगा कि अरे ऐसा कोई इंसान मेरी जिंदगी में नहीं, अरे मैं इससे इतना प्यार करता हूं, अरे भाई इसको मुझे फॉलो करना चाहिए। यही रीजन है तुम्हारे ट्विच में जितनी भी लड़कियां थी, पोकी मानी या जो भी नाम था, पोकी मेन, और भी बहुत सारी हैं, वो सब क्यों फेमस हैं? इसीलिए हैं। Why are we bringing Pokimane into this? Pokimane is not like this. I mean, granted, Pokimane gets a lot of likes and shit, but she's a streamer, does her own content, does stuff that's way outside of this. तुम्हें हो सकता है भाई फॉर वट एवर रीजन तुम ये मान के बैठ गए हो मैं यही डिजर्व करता हूं, मेरे को शायद यहां आपसे बैठ के किसी इंसान को प्यार करना एक स्क्रीन के थ्रू इनफ है, क्योंकि मैं रियल लाइफ में डिजर्व नहीं करता। रियल लाइफ में मुझसे कोई प्यार नहीं करेगा। ये सब झूठ है मेरे भाई। तुम्हारे साथ हो सकता है चीजें हुई हैं बचपन में लेके, माता पिता के व्यवहार से, रिजेक्शन से, अबैंडनमेंट से, जिनकी वजह से एक सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है कि भाई मैं पूरा नहीं हूं, मुझे कुछ। This is actually super important. There is a thing where if you have an online community, if you have a following online, it's online. It has nothing to do with the real world. So when you go around and you hang out with the people and the NPCs around you, and no one really knows who you are, no one knows about like your following or anything, and that's something that you put your hat on at the end of the day, you're gonna feel really shallow and really empty. But if you can have something, a purpose, something that you have that's outside of the virtual world, something that you're proud of that you could work on in the real world, that's going to keep you grounded, and that's going to give you some sense of purpose. For me, it was health, it was fitness, working in the community. That's a great way to keep me grounded and, distracted from an online virtual community that could easily inflate one's ego. What's up, Scotty? कुछ नहीं मिलने वाला, मुझे कोई प्यार कर ही नहीं सकता ऐसे दिखने वाला, ये सब झूठ है। मैं तुम्हें गारंटी दे के कह रहा हूं भाई, तुम क्या बन सकते हो तुम्हें अभी आइडिया नहीं है। तुम जो भी पाना चाहते हो तुम्हें सब। That's why you should go for a run in the morning. I absolutely believe in that. You should go for a run in the morning. I like what you said about doing some stretches, some meditation, some self-reflecting, starting your day. And it sounds cheesy and like only men with like anxiety, insecurities, and live quiet lives of desperation and are too afraid to do it on themselves will to be afraid to sit there and meditate, reflect on the day, and say, okay, what is my goal for the day? What do I want to get done today? And it could be as simple as just saying, yo, I want to be a little bit more present in my friendships and like in my friendships. If I want to sit down and knock out a little, maybe a bit more on my stream and my overlay, or maybe I want to do a little bit better at work. You just kind of sit there and reflect on it, reflect on the past, do some of the things that you didn't like, how you acted in the past, figure out, diagnose why it is, but you have to completely be open and honest with yourself. Nobody's perfect, right? So go ahead, give yourself some grace, laugh it off, and try to be 1% better each and every day. And if you can do that and stack it up, you could be 365% better 1 year from now as of watching this. कुछ मिल सकता Crazy.
है और जो सब कुछ मिल भी सकता है उसके टाइम पे भी तुम ये ताकत एकत्रित कर सकते हो कि मुझे चाहिए ही नहीं। तो वो जो अंडरस्टैंडिंग वाली लेयर है वो ये है जहां तुम समझते हो कि मुझे इससे भी मैं अटैच नहीं होऊंगा। सब कुछ मिल सकता है मतलब ये थोड़ी कि वो अच्छा भी है। ठीक है, मिल सकता है, ओके, गेम मैं यहां से खेलूंगा, गेम में समझदारी से खेलूंगा, लेकिन समझदारी के गेम को खेलने के लिए तुमको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि तुम इस गेम के बादशाह हो, तुम Yeah. बाप हो। Yeah. और बाप Game, you have to live this life like it's a game and you're trying to min-max your stats, right? You're trying to be the best that you can be. It's in ranked mode, it's skill-based matchmaking, and you got to try to raise your skill, your hidden MMR the highest that you possibly can. That way, whatever DLC comes your way, you're fucking ready for it. आप इंसान बनता है कर्म से, अपने हाथ में कंट्रोल लो अपनी जिंदगी का, खुद से डिसाइड करो मैं गुलाम नहीं हूं, पैरासोशली भी मैं गुलाम नहीं बनूंगा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे लाइक करने की जरूरत नहीं है। लस्ट, क्यूटनेस, ओ डैम, मैं तो पागल हो गया हूं, इसको रिपीटेडली देख रहा हूं, ये एक्चुअल में माया है, ये एक्चुअल में इल्यूजन है, धोखा है, छलावा है, ये इससे हटना है तुम्हें। Don't be a king? What's that mean? टोटल फोकस पे आओ। दो तरह का फोकस, एक बाहर मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए, एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए, दूसरा मेरे अंदर क्या चल रहा है। सिंपल, दो चीजें इनफ हैं। बाहर मुझे क्या चाहिए, उसमें ऑलरेडी घंटे चाहिए तुम्हें अचीव करने के लिए। अंदर क्या चल रहा है उसको रेगुलेट करने के लिए अवेयरनेस बेस्ड कर्म, एजुकेशन बेस्ड कर्म। मेरे अंदर क्या चल रहा है ये जानू मैं, मेरे अंदर चल रहा है वो है क्या ये जानू मैं। यहां पे साइकोलॉजी आती है, स्पिरिचुअलिटी आती है, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स आते हैं, यहां पे अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन, डेटा कलेक्शन आता है। इस पे आओ, सेल्फ कंट्रोल ऐसे आएगा। अगर तुम इतनी आसानी से बह जाते हो एक सिंपल इंस्टाग्राम रील में एक लड़की को देख के, तो तुम्हारी जिंदगी में जब रियल लाइफ इंटरेक्शंस होंगे तो Yeah, don't be a king because the British will come and it's going to be in the form of a hot British girl with a really fat accent. And all of a sudden, you're going to blink, and 9 months later, your whole bank account's drained out. And you're like, what happened to me? And she's like, are you ready for tea and crumpets? मेरे भाई तुम्हारा क्या होने वाला है, तुम कुत्ते कैसे नहीं बनोगे, तुम पागल कैसे नहीं बनोगे, तुम एक सेकंड में सब कुछ छोड़ने के तैयार क्यों नहीं हो जाओगे। तुम कैसे नहीं कहोगे इंसान से भाई मैं गुलामी करने को तैयार हूं तुम्हारी, मैं कुछ भी कर लूंगा तुम्हारे लिए। वो इंसान भाव ना दे रहा हो तब भी मैं पूरे दिन खड़ा हूं तुम्हारे लिए, मैं रात भर जगह हूं तुम्हारे लिए, मैं प्रोवाइड करने के लिए कुछ भी कर दूंगा। ये तभी तो हो रहा है जब तुम्हारे अंदर कंट्रोल है ही नहीं अपने का। तुम सिंपल छोटी सी क्यूटनेस में अपने आप को जब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे भाई जब तुम्हारे सामने चीज होगी, एक इंडिविजुअल अटेंशन मिल जाए, तब क्या करोगे तुम सिर्फ गुलामी करोगे, क्योंकि उस इंसान के दिमाग में तुम्हारे लिए वो ख्याल नहीं आ रहे। तुम समझना No, this is big facts. Big facts. Don't be a slave to your emotions. The only thing you can really control in this life is how you handle yourself and your emotions. So you definitely don't want to become a slave to either one of those. You want to be in control of your own thoughts, your own actions, and your own spirit. मैं कहां कहना चाह For रहा हूं, sure, तो for तुमसे sure. प्यार भी करता हो, लेकिन वो पागल नहीं हो रहा तुम्हारे लिए जैसे तुम उस इंसान के लिए पागल हो रहे हो। तो एक एसिमेट्रिकल पावर डायनामिक्स है। मैं ज्यादा अटैच्ड हूं, मैं ज्यादा पागल हूं, मैं इसको ज्यादा चाहता हूं जितना ये मुझे चाहती है। अगर चाहते हो ऐसे रिश्ते बने तुम्हारी जिंदगी में जहां पे तुम उस इंसान की सम्मान करो, इंसान भी तुम्हारा सम्मान कर रहा है, तो तुम्हें इन सब चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा। तुम्हें इन सब चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि ना कहने की ताकत तब आती है जब मैं बहता नहीं हूं। ना कहने की ताकत तब आती है जब सामने चाहे कितनी खूबसूरत हो, चाहे कितनी दिमाग उड़ा देने वाली, चाहे क्यूटनेस हो, कुछ भी हो, मैं ना कह सकता हूं जब मुझे रेड फ्लैग दिखे। जब तुम इतने आराम से बह जा रहे हो मेरे भाई, तो मुझे बताओ तुम जिंदगी में जितने लोग भी ऐसे इंसान से मिलोगे जो सेल्फिश है, तुम लोग अपने आप को निकाल ही नहीं पाओगे, तुम लोग तबाह होते रहोगे, क्योंकि तुम मुग्ध हो, हिप्नोटाइज्ड हो यार। उस इंसान के बारे में तुम 1% डेटा नहीं है तुम्हारे पास, 0.1% डेटा नहीं है। क्यूट है तो क्या करें, क्या करें, है क्यूट, ठीक है भाई, क्या करें। ये सोच सकते हो कभी, मान नीचे कमेंट से भाई मैं इसको 2 घंटे से क्यों देख रहा हूं, भाई क्या होगा तुम्हारा, सोचो। सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है भाई। I hope no one's actually sitting there and watching that kind of content for 2 hours. You're getting lost in the absolute sauce if that's the case. And truthfully, गोल क्या है तुम्हारा? I don't know. I think I agree with Gangster. I think I laid out my point pretty clearly on that, like how I feel on this. Okay. If you're picking up what I'm putting down, then please like the video, subscribe, and if you really like it, then share it with some of your friends. My goal here is to spread a positive message while sprinkling my 2 cents on big topics like American, Indian, and world geopolitics, and even small stuff like Twitch drama and online debacles. And if you want to see it live, come join me over on Twitch. Twitch.tv/ActuallyElrod. That's where I'm going to do all my reactions, and after the reactions, that's where we get down a game. And if you're like, hey, I have a video that I want this dude to sprinkle his 2 cents on, then come over on my Discord and let me know and join the community there. And while we're at it, I have to say thank you to everybody who has made that Discord just so poppin'.
I never thought I'd have a Discord that's so flowing. It's really cool to see. Shout out to you, Bobby, Omni, Demon, all of you who have been in there who are just super active. Logie, you're the man. Logie is the one who's like modding and helping run the server, so thank you, Logie. Lastly, I challenge you. I have a challenge for you. Make somebody laugh today. We all know there's enough hate and vitriol in the world. If energy is contagious like the flu, then let's spread and get everyone contagious with our positive energy, right? Not negative energy, because there's so much of that. And if we could just be a small little change in someone's day, then you never know. Maybe that's the thing that starts shifting this world to a happier, healthier, just better place. And with all of that said and done, thank you guys, and I'll see you on the next one.